Welcome to my channel. So in this video I am going to discuss about the instantaneous speed and the instantaneous velocity. So यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो ऑलरेडी हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो है वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुका. वो मेरा लास्ट वीडियो में है. So what is speed? Speed means some time interval और velocity भी क्या हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं टाइम इंटरवल. ठीक है, मुझे यहाँ से यहाँ में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है. बट इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. वो इंस्टेंट में उसका कितना स्पीड है, वो इंस्टेंट में उसका कितना वेलोसिटी है, वो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द डेफिनेशन इज दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स. ठीक है. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पार्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. So basically it means that at that particular instant or at that particular point, what is my actual speed or actual velocity? So this thing basically we can say the instantaneous speed and instantaneous velocity. So what is the formula? Formula it is the v. This is the limit t tends to 0. So this is the dx by dt. So you can say dx by dt. Okay. So that dx or dt means that small instant of time and small instant of this distance. ठीक है, it's small distance. So actually अगर हम लोग उसको थोड़ा डायग्राम से अगर हम लोग समझना, जैसा सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज माय इनिशियल एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन. मे बी इट इज 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर. ओके, एंड द होल टाइम टेक मे बी 10 minutes. So this is my whole velocity. But what is the instantaneous velocity? Instantaneous velocity may be at that particular point, or maybe at that particular point, or maybe at that particular point. What is the velocity or speed at that particular point? We can say this is the instantaneous velocity. So यहाँ पे क्या होगा, मेरा total distance नहीं होगा, मेरा small distance होगा. So in the small distance we can say this is the dx. The time क्या होगा, that small interval of time we can say dt. I think you understood now. Because in case of instantaneous velocity, we don't need that the whole range of the distance or whole range of the time. We only need that particular instant and the particular time. So if anything is particular instant, small instance and small time, then we can say dx by dt. dx मतलब वो मेरा जो particular वो point है. ठीक है, ये small part है. So this is we can say dx and dt means वो particular time. अभी एक यहाँ पे हम देख रहे हैं dt tends to 0. ठीक है. So जैसे हम लोग ने वेलोसिटी में क्या किया, मेरा टाइम रेंज में भी 0 सेकंड टू 5 सेकंड या 0 सेकंड टू 1 मिनट, जो भी मेरा टाइम एक रेंज होता है, ये रेंज के अंदर और ये डिस्टेंस के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं. बट दिस इज व्हाई इट टेंड्स टू 0 मींस इट इज नॉट 0 बट इट इज नियर अबाउट 0. कि अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे तो कोई तो मोशन नहीं है ना, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड नहीं है. बट इट इज नॉट 0, इट इज नियर अबाउट 0 बिकॉज एट दैट इंस्टेंट. सो एट दैट इंस्टेंट द टाइम इज वेरी मच स्मॉल, दैट्स व्हाई यू कैन टेक इट इज डेल्टा t टेंड्स टू 0. So I think now you understood what is instantaneous speed and the instantaneous velocity. The formula is in case of speed v equal to limit delta t tends to 0 del x by del t. Why the delta t tends to 0? Because in that case my time is very much small, but it is not 0. If it is 0 then there is no motion. Okay, so in that case there is no speed, no time, but it is very small time, that's why you can take it is tends to 0 but not equal to 0. Same in case of velocity. Instantaneous velocity is also a particular instant of time or particular point. But here you see the difference is that in case of instantaneous speed, you see this is the formula for instantaneous speed. There is not this kind of bar. You see there is not this kind of bar.
But in case of instantaneous velocity, found that one arrow mark is there and also one this kind of arrow mark. So why we use this arrow mark? ठीक है. So basically ये जो arrow mark उसको वो actually represent करते हैं the direction. ठीक है. अगर कोई भी सिंबल के ऊपर ऐसे एरो है, so it represent its direction. Because in case of displacement, we know what is displacement. Displacement means the difference between the final and initial position, and it must have a direction. So displacement का direction है. So what is the formula for velocity? Displacement part time. So velocity में भी direction होगा. So अगर velocity में direction है तो instantaneous velocity में भी ऐसे direction होगा. ठीक है. So velocity equal to dx by dt. ठीक है. So x में डायरेक्शन है because it is my displacement. ठीक है. So अगर कोई सिंबल के ऊपर ऐसे एरो होता है, so we can say that it has a direction. But if the symbol doesn't represent any arrow, it means it doesn't have any direction. It only has the motion, but it don't have any proper direction. So I think you understood what is instantaneous speed and instantaneous velocity. Very simple है. Instantaneous मतलब वो exact वो point पे मेरा क्या speed हो रहा है, मेरा क्या velocity हो रहा है, ये instantaneous speed और velocity में हम लोग उसको study करते हैं. यहाँ पे हम लोग delta t tends to 0 पकड़ते हैं because बेसिकली जब हम लोग वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पे क्या एक रेंज टाइम होता है. एक रेंज में यहां से यहां तक जा रहा हूं, मुझे टोटल यहां से यहां पे जाने में इतना टाइम लग रहा है. बट इंस्टेंटेनियस मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा क्या स्पीड हो रहा है, मेरा क्या वेलोसिटी हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो वो पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा टाइम बहुत ही कम है. ठीक है. बट वी कैन यूज जीरो हम यहाँ पे दे नहीं पाएंगे. अगर जीरो देते हैं तो क्या होता है, मेरा यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं है, तो रेस्ट हो जाएगा ना. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस डेल्टा t टेंड्स टू 0. और हम कैसे, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हम लोग कैसे कैलकुलेशन स्पीड कैलकुलेशन करते हैं, बेसिकली यूजिंग द स्पीडोमीटर. तो आजकल जो भी व्हीकल्स है वहां पे जो स्पीडोमीटर होता है वो इट गिव द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. वेलोसिटी नहीं, स्पीड है. सो नाउ I think you understood what is instantaneous speed and the instantaneous velocity. Now और एक टर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. One is uniform motion. Sorry, uniform motion. So what is uniform motion? So already we discussed that the uniform velocity. ठीक है. So it is just like this. If any object covers equal interval of time, equal distance with equal distance, it means if any object covers equal distance with equal interval of time, then we can say this is the uniform motion. ठीक है. So uniform motion में क्या होता है, यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यूज नहीं करेंगे because it is a uniform. अगर एक्स्ट्रा फोर्स यूज किया तो उसका यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाएगा. ठीक है. और यूनिफॉर्म the motion it doesn't depend on any मतलब टाइम. सपोज एक कार यहाँ पे मूव कर रहा है. सपोज ये कार है, पोजीशन ए से स्टार्ट रहा है, पोजीशन बी तक जा रहा है. ठीक है. सो मे बी सब कुछ पॉइंट है जिसका में भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है. इसके बाद में भी ये यूनिफॉर्म मोशन, तो इसके बाद में भी ये नॉन यूनिफॉर्म. सो मैं इसको सपोज ये पॉइंट से ये पॉइंट में अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा मुझे क्या मिलेगा कि इन दैट पॉइंट इट में भी the uniform it follow the uniform motion. ठीक है. so it doesn't depend on the origin. मतलब कहां से मुझे कहां से उसको पकड़ना है, कौन सा पॉइंट में मेरा यूनिफॉर्म हो रहा है, वो मैं खुद से डिपेंड करता हूँ. अगर मैं ये पॉइंट में मतलब ऑब्जर्व करता हूं तो दिस पॉइंट इज नॉट यूनिफॉर्म बट दिस पॉइंट इज यूनिफॉर्म. और ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन में हम कभी भी कोई मतलब फोर्स यूज नहीं करते. अगर फोर्स यूज किया तो उसका यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाएगा. ठीक है. सेम व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका एक बार उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो मे बी ऐसे ऐसे उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं. मींस if the motion is varying with the time, then we can say this is the non-uniform motion. So what is uniform? Uniform means it is just like our uniform velocity or uniform acceleration. If it covers equal interval with equal distance with equal time interval, then we can say this is the uniform motion.
The non-uniform means if it is most like a zigzag path or any randomness is there, then we can say this is the non-uniform motion. Okay. So I think you understood what is instantaneous speed, what is instantaneous velocity, and why we represent this bar. We represent this bar because it represents the direction of that object. Okay. Because we use this bar to represent the direction of the object. And in case of this speed, because the speed doesn't have any direction, that's why we can use this bar. And why is delta t equal to 0? Because at that instantaneous time, its time is very much small. That's why we use the delta t tends to 0, but it is not equal to 0. So thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel to get the more updates. Thank you.